Good morning, children. Welcome back to the social session where we were learning about the disaster management. So, under the disaster management, we try to understand its definition, and we also have classified this disaster into slow onset disaster and rapid onset of a disaster. Later, we have classified the disasters as a natural disaster and human induced disaster. Human के वजह से अगर disaster हुए तो उसको human induced disaster है. And I think you know what happened yesterday in Uttarakhand. In Uttarakhand, all of a sudden there were flash floods. Okay, huge disaster has taken place. So, due to the rise in the water level of one of the tributary of river Ganga, Doli Ganga. So, we shall understand during such disasters how to manage. Today, our class is completely dedicated on disaster management. Disaster management covers a wide range of activities designed to control over disasters or emergency situations and to provide a framework for helping people to avoid and reduce the effects of or recover from the impact of the disaster. So, what is disaster management is to control the emergency situation and to provide a framework to avoid or reduce the effect and impact of the disasters on the people. These activities may be related to preparedness, okay, how you need to be prepared for the coming disaster, or otherwise it may be mitigation, how to cope up and overcome such kind of disasters, and emergency response, relief and recovery. So, rehabilitation, recovery as well as rehabilitation, उन लोगों को shelter दिलाना, and for a time being providing them the food and shelter is also the basic requirements. And it may be conducted before, during and after the emergency also, or after the disaster. Disaster से पहले, disaster होते वक्त और disaster के बाद में भी this kind of recovery and rehabilitation steps have to be taken up by the government. Here, why we are provided with this lesson is the teachers and the students can be the integral part of the community. हम इस community में रहने वाले हैं और इधर we are at the ground level to watch the disasters. So, we play an important role in being prepared for disasters. So, when the students are provided awareness how to face the disasters, then automatically it becomes an effective carrier of the messages to the educated to educate their parents and their community also. वो लोग students जो है, अगर आपको disaster management के बारे में मालूम हुए तो आप आपके parents को बताते and आपके community वालों को, नज़दीक वालों को बताते. इसके वजह से the awareness spreads from one to other. So, teachers also have an important responsibility to guide the students in this regard. So, we pass it to the students and students passes it to the community through which the preparedness for the disaster occurs. So, coming to the one of the most important disaster is a tsunami, children. Tsunami. Have you heard this name? Tsunami? कभी सुने? Tsunami बोले तो? I'll tell you what is tsunami. Actually, the term tsunami is coined from the Japanese language. Japanese language में से आए word है ये tsunami. Tsunami बोले तो su, TSU means harbor. Harbor. Or nami means waves. Nami means waves. So, harbor waves it is called. The waves which occur near the harbor are called as harbor waves. Tsunamis are generally the huge waves that are generated by earthquakes, volcanic eruptions or underwater landslides which devastate the coastal communities. ये tsunami कैसे होते हैं? Whenever there is a earthquake under the water, पानी में earthquake आया तो वो पानी ऊपर उड़ के कोस्टल कम्युनिटी, कोस्टल रीजन्स के ऊपर गिरती है. उसके वजह से पूरा पानी भर जाती कोस्टल रीजन. So, such kind of waves, if the height of the waves is very high and fall on the coastal communities, that is called as a tsunami. And this occurs because of the landslides in the water or a volcanic eruption or नहीं तो earthquake की वजह से होती है. Tsunami is caused by nearby earthquakes may reach the coast within the minutes when the earthquakes occur under the water. And you know, children, one of the most important secret thing also, most of the earthquakes and most of the volcanic eruptions occur under the water than on the land.
लैंड के ऊपर से बहुत ज़्यादा earthquakes जो है, बहुत ज़्यादा volcanic eruptions जो है वो अंडर वाटर में होती है. Those all are happening under the water. मगर उसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा रहे तो कोस्टल रीजन के बहुत नज़दीक अगर earthquake हुआ तो that waves will rise and will devastate the coastal region. So the tsunami danger period can continue for many hours after a major earthquake also. So what should be done at the time of a tsunami? Tsunami आए वक्त क्या करना चाहिए? So let us find out if your home, school or workplace or other very frequently visited locations are in the tsunami hazard zone में है कि नहीं. हमारा वारंगल तो नहीं है because हमारा coastal region नहीं है. Okay, coastal regions will be under the tsunami zone. मगर हमारा वारंगल जो है वो सुनामी जोन में नहीं है, सुनामी प्रोन जोन में तो नहीं है. एंड लेट अस इफ यू आर इन द सुनामी जोन, कल जाके आप विशाखापट्टनम में पढ़ रहे, नहीं तो चेन्नई में पढ़ते हुए अगर सुनामी आया समझो, देन व्हाट शुड बी डन? यू नीड टू प्लान इवैक्यूएशन रूट्स फ्रॉम योर कॉलेज और फ्रॉम योर स्कूल टू योर हाउस or from workplace to any other place you could be safe from the tsunami. So generally when tsunamis occur, people will climb at a high place. और वेव, वाटर वेव से ऊपर प्लेसेस को भागते रहते हैं. सो ऑलवेज प्लान इन सच ए वे दैट ड्यूरिंग द सुनामी यू रीच ए हाई प्लेस विच इज सेफ फ्रॉम द सुनामी. एंड प्रैक्टिस योर एवैक्यूएशन रूट्स आल्सो. वो रूट जो है ओके कैसे जाना, क्या होती है अगर पानी भर गया तो किधर पे कौन सा मैन होल है देख लेना चाहिए. एट द टाइम ऑफ सुनामी यू कैन फास्टली मूव इन दैट रूट. सो हैव डिजास्टर सप्लाईज रेडी एट हैंड. जब भी सुनामी आती है नहीं तो और एक डिजास्टर होती है, योर इमरजेंसी किट शुड बी रेडी, जिसमें आपका टैबलेट्स, आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कागजात जो है उसको रख लेना चाहिए. एंड यू मस्ट बी रेडी टू हैंड एंड यू मस्ट डिस्कस दिस वन इवन विथ योर फैमिली आल्सो. सभी लोगों को अलर्ट करना चाहिए, नियर बाई लोगों को भी अलर्ट करना चाहिए. एंड ड्यूरिंग सुनामी क्या करना चाहिए? If you are at home and hear that tsunami warning has been given by the government, then immediately you should make sure the entire family is aware of the warning. सभी लोगों को मालूम है कि नहीं पता कर लेना चाहिए. And your family should evacuate to a safe place and evacuate to a safe elevated area. जैसे मैं बताया था ऊपर elevated area okay को जाना चाहिए. And calm, हैराना नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए. ओके आपके परेशानी की वजह से और एक परेशानी, डिजास्टर में बिकम मोर ग्रेव. सो फॉर दैट रीजन बी काम एंड एवैक्यूएशन साइट को निकल जाना चाहिए. एंड टेक योर डिजास्टर सप्लाई किट. ओके जब भी डिजास्टर्स होती है ओके सप्लाई किट आपके साथ लेना चाहिए. एंड दिस सप्लाई किट विल मेक यू मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग द एवैक्यूएशन. सप्लाई किट में सभी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन, पानी और कुछ भी जो इमरजेंसी में काम आती है वो पूरा, और फ़ोन नंबर्स, चार्जर, ये पूरा रख लेना चाहिए. एंड इफ़ यू एवैक्यूएट टेक योर एनिमल्स आल्सो विथ यू. अगर आपके घर में कुत्ता है नहीं तो कुछ पालतू जानवर है उसको भी आपके साथ लेके जाओ, उसको छोड़ के आप ही भागो मत. सो इफ़ यू आर एट द बीच आर नियर द ओशन एंड फील दैट द अर्थ शेक, if you are at a beach and you feel that earth is shaking, then immediately vacate that place and move to the higher ground and wait for tsunami warning. So stay away from the rivers and the streams that may lead to the oceans. जो पानी नदी से लेके बहती है ओशन में, उधर वो जगह पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए. So this is about the during the tsunami. We shall further see about it in next class. Thank you children.